हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी आपणकर थर्ड सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास टी रही। यापर आम ग्रामर पार्ट जहाँ सब आपणकर एक मार्क आसो आम सब डिस्कसन कर सारे। यहाँ आपणकर रही जो आपणकर थ्योरी रहीगला कम्युनिकेशन कौन तापर दो दी फोर स्किल्स रीडिंग स्किल स्किमिंग स्कैनिंग से आपणकर क्वेश्चन आसी तो केमिति एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो सेथुरु आज आमे डिस्कशन करिबा डैशपूरण केमिति आसीबो गोटे शब्द जो सेथुरु केमिति आसीबो। तो भल भाबरे वीडियो टू संपूर्ण देखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास टी रहिछि जहाँ द्वारा आपनकर समस्त प्रकार डाउट क्लियर होई परिबो। एथिरु ही आपनकर जेमिति ले अधिकांश क्वेश्चन आसीबो भल भाबरे वीडियो टू शेष पर्यंत देखिबे एवं चैनल को जदि आपने पर्यंत सब्सक्राइब करनाहांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहाँ द्वारा एभली प्लस ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक आपन पाखरे सर्वप्रथमे पहुंच परिबो। तो फ्रेंड्स आज हम 40 टी एक मार्क प्रश्न उत्तर डिस्कसन करिबा केमिति आसीबो मु आपन कहिथिबे यापर हम ग्रामर पार्ट रो सब क्वेश्चन डिस्कसन कर साचे जहाँ आपनकर पॉसिबल क्वेश्चन रही एग्जाम पे ताको आपन डिस्क्रिप्शन जाइके थर्ड सेमिस्टर कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास प्लीज लिंक जतोटी क्लास होची आपन सब देखि परिबे। तो रही फ्रॉम व्हिच वर्ड इज द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड। तो आंसर रही वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। तो आपनकर मध्य डैशबोर्ड देथिबो फ्रॉम डैश वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड। तो आप लिखिए लैटिन वर्ड। तो आपनकर एई भली क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट क्वेश्चन जानिले एटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कम्युनिस्ट। जो वर्ड कम्युनिस्ट रो मीनिंग कौन तार आंसर हो मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिस्ट इज कॉमन। व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो आपन एमती डैश इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। तो आप लिखिए कम्युनिकेशन तार आंसर अच्छी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग्स। दुई मार्कर मध्य आपनकर पचार देबो जे व्हाट इज कम्युनिकेशन गिव एन एग्जांपल। तो आपने सेतरे मध्य आकु लिखि परिबे केउथुर आसीछि। तो जो सब आपनकर दुई मार्किया थ्योरी क्लास ताकु मध्य हमें डिस्कसन कर साचे टोटली हमर क्लास कंप्लीटेड हो साइछि आपने प्लेलिस्ट लिंक देखि नेबे। तापर अछि व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। तो आंसर अछि कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू डील विथ चेंज इन एन इफेक्टिव वे। तापर हु शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो आंसर अछि बिजनेस एग्जीक्यूटिव शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। एक मध्य आसि परिबो जे डैश शुड आपनकर गोटे वाक्य सब दे देछि से एइथ्रु मध्य आपनकर डैशबोर्ड आसि परिबो। तापर अछि व्हाई डू यू दे use communication। तार आंसर अछि they use communication to communicate their completing vision and motivate the persons or parties concerned। तापर अछि write a definition of communication। तार आंसर अछि communication is an exchange of facts ideas opinions or emotions by two or more persons। तो एठी आपननको दे देथिबो जदि आपननको एक मार्क आसी परिबो जे डैश इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आपने लिखिबे कम्युनिकेशन। एटा मध्य आपनकर एग्जाम रे आसुची। तो कम्युनिकेशन डेफिनेशन पचले एटा आपने निश्चय लिखिबे। तापर हु सेड कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट आइडियाज ओपिनियंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो की कहथले ना डब्ल्यूएच नॉर्मन एंड समरसेट। तापर व्हाट इज एन वे रजी व्हाट इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन कौन। तार आंसर अछि वन वे कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन वेयर नो फीडबैक इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर। तो वन वे कम्युनिकेशन आपनकर रिसीवर ठू कोनोसी फीडबैक ग्रहण करा जाय नै। इथिबो डैश कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन नो फीडबैक इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर। तो आपन लिखिबे वन वे कम्युनिकेशन। एठी आपनकर टोटल दे दिछि वर्ड सेठी मध्ये एग्जाम रे आपनकर डैश पूर्ण पचारि परिबो। तापर ग्रामर पार्ट रो आसी जो कॉलेज रे एक मार्किया दुई मार्किया से कॉलेज रे आपनकर एथरे ग्रामर पार्ट रो एथरो निश्चय क्वेश्चन आसीबो भल भाबरे को देखि नेबे। तापर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तार आंसर अछि देयर आर 7 एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आकु मध्ये मन रखि देबे 7 प्रोसेस रहिछि 7 एलिमेंट्स रहिछि कम्युनिकेशन प्रोसेस रे। तापर व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कोन फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इज रिसीव्ड इन टू वे कम्युनिकेशन। मी दे देथि आपनकर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इज रिसीव्ड इन डैश वे कम्युनिकेशन। तापर व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कोन communication made on the basis of hierarchy accountability and authority is called formal communication। तापर give some examples of formal communication।
रही डिपार्टमेंटाल मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस सर्कुलर्स इंटरव्यूज होची आपनकर फॉर्मल कम्युनिकेशन आपनकर देथिबो ऑप्शन दे दिथिबो लिखिथिबो आपनकर केउटा फॉर्मल कम्युनिकेशन आपन चूज कर परिबे। तापर व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन कौन कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन एगुडी आपन सब मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन भल भाबरे को नोट करके मन रखिदेवे आपको आमर पूर्व डिस्कसन हो सारी जो मैंने क्लास कर जानिथिबे। तापर व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू सिंबल इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तापर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द peers और employees of same rank in unit। तो आपनकर दे देथिबो डैश कम्युनिकेशन इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द peers और employees of same rank in a unit। तापर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो आपनकर एटा आपन कहियो वर्टिकल एटी आपन भूल दे देछि व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन इज फ्लो ऑफ मेसेज बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट से बोले अपन दे देथिबो डैश इज द फ्लो ऑफ मेसेज बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तापर अछि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग्स एंड मीनिंग among people through verbal and non-verbal ways is called interpersonal communication। तापर what is grapevine communication which take place outside the workplace is called grapevine communication। what is the other name of grapevine communication तो रही informal communication other name of grapevine communication होची informal communication। तापर what is intercultural communication तो रही तो आपन जो केउ कम्युनिकेशन ता कोन कहै छै तार अन्य नाम कौन तार एग्जांपल कौन एक मोस्ट इंपोर्टेंट रही भल भाव को प्रैक्टिस करदेवे। तो रही कम्युनिकेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इज कॉल्ड एज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तापर व्हाट इज इंडियनिज्म कौन अले इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश इज कॉल्ड इंडियनिज्म। तापर कम्युनिकेशन व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिशियल कल्चर सोशल एंड पर्सनल पर्पस एमिति मध्ये आपन देथिबो दुईटी तीनोटी यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखिया देथिबो आपन लिखिबे। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेस्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग तो जो अल्टरनेटिव टेस्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर सॉफ्टवेयर्स वेबसाइट्स एप्स मल्टीमीडिया इटीसी। तापर व्हाट इज ग्लोबल इंग्लिश इज द कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज used for international communication। तापर what means of communication is used today तो wireless and electronic means of communication is used today। तापर नेक्स्ट जिबा हमर रही तो जहाँ हमर आगु डिस्कशन होची भल भाव नोट को लिखि देबे एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल रहबो जहाँ ग्रामर रही ताकू मध्ये हमर प्रैक्टिस कर देबे। देछि व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग कौन एक्टिव लिसनिंग इज व्हेन ए पर्सन listens to some speech or saying mindfully and attentively ताकू कजे हमर एक्टिव लिसनिंग देथिथो डैश लिसनिंग इज व्हेन ए पर्सन लिसन टू सम स्पीच और सेइंग माइंडफुली एंड अटेंटिवली तो हे जिबा आपनकर एक्टिव लिसनिंग रे। तापर व्हाट इज पैसिव लिसनिंग व्हेन तो आपनकर जो एक्टिव लिसनिंग रहला पैसिव लिसनिंग रहला स्किमिंग रहला स्कैनिंग रहला इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग आपको भल भाव प्रैक्टिस कर देबे 1 मार्क 2 मार्क में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉलेज रे आपनकर 2-4 मार्किया दीर्घमूलक आसु ताको ता पे मध्ये इंपोर्टेंट। तो व्हाट इज पैसिव लिसनिंग व्हेन ए पर्सन ओवर हियर्स और हियर्स सुपरफिशियली इट इज कॉल्ड पैसिव लिसनिंग। तार व्हाट इज राइम इज रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड एंड मूवमेंट। तार व्हाट इज राइम इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग एंड आल्सो फॉर म्यूजिकल पर्पस। What is intonation? Intonation is the rise and fall of a voice while speaking। तापर what is chunk? Chunk is the collection of a basic familiar units grouped together in memory। What do you mean by tone? Tone refers to author's use of words and writing style convey his or her attitude towards a topic। तापर what is accusatory tone? It is the tone suggesting someone has done something wrong। तापर व्हाट इज व्हाट इज एडमिरिंग टोन दिस इज टोन इज अप्रूविंग रेस्पेक्टफुल एंड प्राइजिंग। तो टोन मध्ये आपनकर भल भाव देखिदेबे टोन मध्ये क्वेश्चन आछि। तापर व्हाट इज कल्कोयल टोन इज ए फैमिलियर इनफॉर्मल एंड कैजुअल। तापर वेयर इज कल्कोयल टोन इज यूज्ड इन एवरीडे
language. Next ଆମର ଅଛି what is empathetic tone. Empathetic tone is understanding, kind and sensitive. ତାପରେ what is ambiguous tone. Ambiguous tone is unclear tone. What is skimming? ଏଠି ଆପଣଙ୍କ skimming ଦେଇଛି, ଏଟା ହେବ skimming. Skimming is to run on one's eyes over the text to have important information in the reader's mind. ତାପରେ what is scanning? Scanning is the process of searching for numbers, words, phrase, etc. of a passage. तार मीनिंगटा भल भाव आमर सब डिस्कसन होइछि आर कोन स्किमिंग कोन स्कैनिंग कोन टोन कोन आकु भल भाव आमर प्लेस जाई देखि नेबे तार एग्जांपल्स मध्ये दियाछि आपनकर एग्जांपल्स तार डेफिनेशन तार अन्य नाम कोन ताकु आपन भल भाव आमर डिस्कसन हो जाइछि थ्योरी क्लास गुडी करे आकु आमर सब रिवीजन क्लास होछि भल भाव ताकु जाई देखि नेबे नोट कर देबे जहा द्वारा आपन एग्जाम रे भल मार्क रखि परिबे एइभली आपनकर डेफिनेशन पचारथिबो किबा डैशबोर्ड पचारथिबो काहाको कुहा जाय केउथुर आसीछि ताको भल भाव देखि नेबे एग्जाम रे एमिति आपनकर क्वेश्चन आछि एटा तला आपनकर जो आउ जो सब यूनिट रहिछि ग्रामर पार्ट रे हम सब डिस्कशन कर सजे प्राय त आपनकर कंप्लीट होई साछि क्लास प्लीज जाई सब क्लास आपन देखि नेबे निज सांगवान जो माने क्लास करि पानति सेमाने पाको ए भिडियोटी निश्चय शेयर कर देबे जहा द्वारा सेमाने मध्ये इंपोर्टेंट क्लास रे करि परिबे भिडियोटी यदि आपन को भल लागिछि त भिडियोटी लाइक कर देबे चैनल को यदि आपने पन सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे जहा द्वारा एभली प्लस ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक क्वेश्चन पेपर वीडियो गुड़िक इंपोर्टेंट एजुकेशनल न्यूज अपडेट गुड़िक आपन पाखे सर्वप्रथमे पहुंचारिबो। तो फ्रेंड्स वीडियोटी रखिबा, धन्यवाद।